Good morning, dear students. In our previous class, we discussed the types of sentences, the way we make them. When I'm just building a sentence, according to construction, the sentence might be either simple or compound or complex. So in simple sentence, we've got one subject and one predicate. And in the simple sentence, we've studied and we got there are 6 types of sentences: affirmative, negative, interrogative, imperative, optative, exclamative, like that. Then we got compound sentence when 2 or more independent clauses, independent or coordinate clauses are joined and they are made into one sentence. That sentence is considered compound sentence. And to understand the compound sentence, you have to understand what it means by an independent clause or a coordinate clause. And when suppose there are 2 sentences and the 2 sentences are not related to each other but they are joined by a conjunction, so in that condition, that final sentence will be recognized as a compound sentence. Then we got complex sentence. That is when there is one sentence, and when you pull that sentence and you are getting when you pull the sentence, the consequences, the sentence is pulled in the form of another sentence. That is, suppose I am going to Raipur. This is a sentence. Suppose I want to stretch the sentence. मैं रायपुर जा रहा हूँ, इसको मैं खींचना चाहूँगा, तो कैसे खींचूंगा? मैं रायपुर जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ. सपोज मैं रायपुर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? क्यों के बदले में आंसर आया क्योंकि मेरा कुछ काम है. तो क्योंकि मेरा कुछ काम है, this is the next sentence that I got as an answer to the question that was put against the first sentence. When the 2 sentences coupled together, the 2 sentences will not be recognized as sentences, rather they will be called as clauses. They will be recognized as clauses. So in complex sentence, you are getting one sentence, the first sentence, that is principal clause, principal or main clause. When you're pulling the sentence, the first sentence, and you are getting the answer in the form of another sentence, the answer sentence will be recognized as the subordinate clause. So in complex sentence, you get one main clause plus one or more subordinate or dependent clauses. So we studied it in point number 9. Next, point number 10. That is point number 10. Till now, you will come to realize that in any language there are 4 units, namely sentence, clause, phrase, and parts of speech. And we are in our chapter number 1, that is some basic concepts. Means what things we have to learn in the name of grammar that we're going to deal with in this chapter. So point number 10, that is, in point number 10, we're going to discuss a very, very important matter that bears much importance for learners from countries other than England. Suppose we're Indians. English is not our native language. So when we learn English, we have to take the help of our mother tongue. One's mother tongue might be, suppose a person might be from Bengal, from that is Chhattisgarh, from Orissa. So considering that the factor that his native language is not English, he has to take the help of his mother tongue, and with the help of his mother tongue only, and the person will be able to learn English. So what is important is point number 10, we have to study, that is, similarities and differences between Hindi and English. Here, suppose I learn
English with the help of Hindi, or some other person might be learning English with the help of his mother tongue. That might be Bengali, that might be I mean what any South Indian language, that might be Haryanvi, or that might be Punjabi. That is so. I mean, only with the help of his mother tongue, the person will be in a position to understand the concept of grammar. I mean clearly. So, without taking the help of any mother tongue, foreign, a speaker of any other country than England will not be in a position to get the concepts of English grammar very clearly. So, समानता और असमानता किसके बीच में? हिंदी और इंग्लिश के बीच में. That is, क्योंकि जब हम कोई लैंग्वेज को सीखते हैं, सो जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आप डायरेक्टली इंग्लिश नहीं सीख सकते हो. सबसे पहले क्या, आपको अपना जो मदर टंग है उसका कुछ ना कुछ मदद लेना पड़ेगा. अगर आप हिंदी में ही नाउन को नहीं पहचान पाओगे तो इंग्लिश में कैसे नाउन को पहचानोगे? अगर हिंदी में ही प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को या क्लॉज को या फ्रेज को अगर हिंदी में ही नहीं रियलाइज कर पाओगे तो इंग्लिश में उसको कैसे रियलाइज करोगे? What is important is we find that suppose mostly grammar in all the languages are mostly same. There might be some difference, up to 5 to 10%. But what is important is mostly the grammatical facts are mostly same in all the languages. Okay, and the concept is more or less same. That is similarities and differences between Hindi and English. समानता और असमानता किसके बीच में? हिंदी और इंग्लिश के बीच में. क्योंकि हम डायरेक्टली इंग्लिश को नहीं सीख सकते, we cannot learn English directly. So we have to consider how at the time of building an English sentence we are going to arrange the words. What are the logic behind the arrangement? That is. So similarities. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? Similarities. Similarity number 1. What is the first similarity? जैसे हिंदी के वाक्य और इंग्लिश के वाक्य अर्थ के हिसाब से समान होते हैं. जैसे पंखा चल रहा है. सपोज पंखा चल रहा है का इंग्लिश क्या हो गया? फैन इज मूविंग. ये इंग्लिश का सेंटेंस है. अब इसको जब हिंदी में लिखते हो, क्या लिखते हो? पंखा, मूविंग मतलब चल रहा, मतलब इंग्लिश में हो गया चल रहा मतलब मूविंग मतलब चल रहा, और है मतलब इज. सपोज यू कंसीडर दिस इज द हिंदी सेंटेंस एंड दिस इज द इंग्लिश सेंटेंस. पंखा चल रहा है, this is Hindi sentence, and in English we are getting fan is moving. So my fault is my purpose is to highlight one thing, that is fan is moving का जो मतलब है पंखा चल रहा है का वही मतलब है. Suppose someone asked you what is the meaning of fan is moving? Fan is moving का क्या मतलब है? आपने अपना हिंदी भाषा में बोल दिया पंखा चल रहा है. Suppose a person is standing near you and he is not able to understand either this English or Hindi. अगर उस आदमी को, आपके पास में जो आदमी बैठा है, अगर उसको ना तो हिंदी इंग्लिश मालूम है और ना हिंदी मालूम है, for him this sentence will also not, the person cannot understand the meaning of this sentence, and also because that person does not know Hindi, so for him पंखा चल रहा बोलने से भी it will not mean anything. उसके लिए कोई मतलब नहीं होगा. So what I'm telling is fan is moving का जो मतलब है पंखा चल रहा है का वही मतलब है. ये इंग्लिश का सेंटेंस है और ये हिंदी का सेंटेंस है. ये क्या है? These are two sentences. सेंटेंस और सेंटेंस का मतलब हम पहले से पढ़ चुके हैं. एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट. ये प्रेडिकेट है इज मूविंग, पंखा सब्जेक्ट है और चल रहा है प्रेडिकेट. सेंटेंस इज ए बॉडी. सेंटेंस क्या है? ए बॉडी है. बॉडी इज विजिबल. शरीर दिखता है.
ये दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, दैट इज नॉट विजिबल. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट विजिबल. मीनिंग क्या है? इट इज द सोल ऑफ द सेंटेंस. जैसे हम वी कैन सी द बॉडी, हम शरीर को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द सोल, वी कैन नॉट सी द स्पिरिट. हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं. इसका आत्मा, इसका आत्मा, इसका जो आत्मा है, इसका वही आत्मा है, बट द बॉडीज आर डिफरेंट. ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, और ये हिंदी का है. दिस बॉडीज मीन्स सेंटेंस इज अ बॉडी, बट मीनिंग जो है वो उसका आत्मा है. आप आत्मा को नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते हो. इंग्लैंड का आदमी इसको सुनने से जो महसूस करेगा, और हिंदी का आदमी ये सेंटेंस को सुनने से जो महसूस करेगा, दोनों दे विल and both these persons, a speaker of English sentence and a speaker of a Hindi sentence, okay, they are telling two sentences, but their meanings are same. इसका जो मतलब है, इसका वही मतलब है. So my point is, similarity is number one. हिंदी का वाक्य और इंग्लिश का वाक्य अर्थ के हिसाब से समान होते हैं. That is. So point number one, we got a Hindi sentence and an English sentence are sentence have the same meaning. एक हिंदी का वाक्य और एक इंग्लिश का वाक्य अर्थ के हिसाब से समान होते हैं. ओके, और यू कैन राइट अदर वे, और a English sentence or a Hindi sentence are same मीनिंग वाइज, अर्थ के हिसाब से सेम होते हैं. जैसे इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ वही है. दैट इज सिंपल. दैट इज दिस इज द फर्स्ट सिमिलरिटी. देन द सेकंड सिमिलरिटी, समानता नंबर 2. व्हाट इज द सिमिलरिटी नंबर 2? सपोज फॉर एवरी वर्ड इन हिंदी you get word or word group in English. That is, for every word or word group. And when we are, writing here a word group, you have to understand what it means by word group. Word group को grammatically क्या बोलते हैं? इसको phrase कहते हैं. क्या बोलते हैं? We have already studied, we have discussed the phrase, the point, phrase. Okay? For every word or word group or phrase, there is a word or word group. For every word or word group or phrase, in Hindi, there is a word or word group in English. मतलब what is this? हिंदी वाक्य का, हिंदी का हर शब्द या शब्द समूह के लिए इंग्लिश में एक वर्ड या वर्ड ग्रुप, एक शब्द या शब्द समूह इंग्लिश में भी होता है. एग्जाम्पल के लिए, राम कॉलेज में पढ़ता है. In Hindi, you got Ram, then college, then मैं, then पढ़ता है. And for every word in Hindi, you got a word in English. Ram, college, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मैं, पढ़ता है. So for Hindi, you got English. Okay, that is Ram. This is Hindi. For Hindi, you got it. Suppose वह
मेरे साथ बिजनेस करता है, वह मेरे साथ बिजनेस करता है. So we can observe one thing, that is, for every word in Hindi you are getting a word in English. Ram college में पढ़ता है. Suppose this is a Hindi sentence, but I am not writing the Hindi words, I am directly writing the words, those English words for those Hindi words in English. Likewise, here in this example, वह मेरे साथ business करता है. This is also, I wrote the English words of the Hindi words, okay, that we are making use of in the Hindi sentence. तो हिंदी सेंटेंस में जो यूज हुआ उन शब्दों के बदले में मैंने डायरेक्टली इंग्लिश में शब्दों को लिख दिया. So our point is, for every word or word group, that is phrase in Hindi, there is a word or word group in English. This is also similarity. So this is the first similarity, this is the second similarity. Okay. Then we're coming to similarity number 3. That is, so when we're going to discuss the similarity number 3, before that I would like to bring a fact before you. Okay. That is through note. And this is most important thing, and that is, unless you realize this, right? The concept of this, how to arrange the words in the sentences will not be there. Sometimes we say that some words in Hindi are used the same way they are, same way as in English also. Suppose. Note, that is, एक शब्द एक वाक्य में 3 प्रकार से यूज होता है. A word is used in a sentence in 3 ways. Number 1, एक शब्द एक वाक्य में 3 प्रकार से यूज होता है. Number 1, word used in a sentence. A word used in a sentence in 3 ways. 3 प्रकार से एक शब्द एक वाक्य में यूज होता है. Okay, to understand point number 3, we have to understand some other facts also, and that other fact I am going to mention, I am going to explain here. एक शब्द एक वाक्य में 3 प्रकार से यूज होता है. क्या क्या है? Number 1, एक शब्द को यूज किया जाएगा. क्यों यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए. मतलब सब्जेक्ट के बारे में जब बताते हैं हमको क्या मिलता है? प्रेडिकेट मिलता है. तो फर्स्ट जो है, एक शब्द का प्रेडिकेटिव यूज होता है. प्रेडिकेटिव यूज. क्या यूज? प्रेडिकेटिव यूज. प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या है? used to build predicate or make discussion about the subject. मतलब एक शब्द को यूज किया जाएगा. A word used, predicative use, used to build the predicate, to build the predicate or make discussion about the subject. सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए उस शब्द को इस्तेमाल किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए, सपोज टेक दिस सेंटेंस, फैन इज मूविंग. यहां पर इज का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? पंखा के बारे में बताने के लिए. पंखा क्या नहीं है, कैसा है, चल रहा है. चल रहा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? पंखा के बारे में बताने के लिए. सो आई वांट टू make one thing clear, that is, when a word is used to make a discussion about the subject, means when a word takes part in making discussion about the subject, then we say that word is used
प्रेडिकेटिव यूज उस वर्ड का हो गया, बल्कि उस प्रकार से हम उसको रियलाइज करते हैं. दैट इज द फर्स्ट इज प्रेडिकेटिव यूज. द नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? जब एक शब्द जैसे अन्य शब्द को सीमित करेगा. सीमित मतलब क्या है? जैसे पेन. कौन सा पेन? रेनॉल्ड पेन. रेनॉल्ड क्या किया? पेन को सीमित किया. दूसरा कोई पेन नहीं, रेनॉल्ड पेन. लोग, भारतीय लोग क्या हो गया? नाउन हो गया. भारतीय क्या किया? लोग शब्द को सीमित कर दिया. शहर, रायगढ़ शहर एक नाउन है. रायगढ़ क्या किया? शहर को लिमिट. दूसरा कोई शहर नहीं, रायगढ़ शहर. सेकंड में क्या हो रहा है? फर्स्ट में प्रेडिकेटिव जो हो गया, एक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए. दूसरा में क्या हो सकता है? एक शब्द को इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे किसी शब्द को सीमित करने के लिए. क्या करने के लिए? सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए. दैट इज एट्रीब्यूटिव यूज. यूज्ड टू लिमिट a word or word group. इसको जब एक शब्द सीमित करेंगे, जैसे उत्कल एक्सप्रेस. उत्कल क्या किया? एक्सप्रेस को सीमित किया. जब कोई शब्द किसी को सीमित करता है, वो जिसको सीमित करता है उसके पहले लगता है. तो मीन्स नंबर वन, एक शब्द का इस्तेमाल हो सकता है क्यों? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए. हम उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव जो हो गया. सेकंड में क्या हो गया? एक शब्द का इस्तेमाल हो सकता है. क्यों हो सकता है? दूसरे किसी वर्ड या वर्ड ग्रुप को लिमिट कर सकता है. मींस यूज्ड टू लिमिट a word or word group. That is called attributive use. So there is lack of space here, so I am erasing this page. So be comfortable with that. That is ये हो गया पॉइंट नंबर 2. दैट इज एक शब्द इस्तेमाल होगा. नंबर 1 प्रेडिकेटिव यूज, नंबर 2 एट्रीब्यूटिव यूज. नंबर 3 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. दैट इज now first that is predicative, second that is attributive, third क्या है? independent use. independent use मतलब क्या हो गया? जब एक शब्द स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होगा, वो ना तो किसी को सीमित करेगा ना किसी विशेषता बताएगा. इंडिपेंडेंट यूज. ओके. नाइदर used to used in building the predicate nor used in limiting a word or word group. मीन्स एक शब्द ना तो चर्चा में हिस्सा लेगा ना किसी को सीमित करेगा. जैसे राम इज कमिंग. राम जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, वो ना तो किसी को सीमित कर रहा है ना उसके बारे में ना चर्चा में हिस्सा ले रहा है. रादर उसी शब्द के बारे में ही डिस्कस हो रहा है. तो जनरली क्या होता है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है, sometimes interjections, sometimes conjunctions, वो इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं. ओके. दैट इज. तो कोई भी शब्द जब एक वाक्य में यूज होता है, वो तीन प्रकार से यूज हो सकता है. या तो प्रेडिकेटिव यूज, या फिर एट्रीब्यूटिव यूज, या फिर इंडिपेंडेंट यूज. ओके. दैट इज. अभी हम लोग we're discussing similarity and differences between Hindi and English. The first we're discussing the similarity. The similarity is one, that is for Hindi sentence or English sentence will be same meaning wise, and for every word in Hindi you get a word in English. Then number 3, our discussion is still continuing, and in our next video we'll be continuing with our
That is point number 3. That is how the words are used in the sentence. That is. So let us stop the class today.